Hello friends, class 12 science. Welcome to the video on the first video on the chapter of electrostatics, that is electric charge. What we are going to study is what exactly is the meaning and what are the basic properties of electric charge. So first of all, there are a few things about electric charge that you already know. That electric charge is of two types, positive and negative. Positive charged particles are known as protons and negatively charged particles are known as electrons. And if you remember from the knowledge of class 10th that the charge of proton is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And for the electron, it is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, the charge of proton, this big number, can also be represented by a small notation plus E, and the charge of electron, that is equals to this, can also be denoted by a small notation, that is minus E. One more thing that you might be remembering, or if you don't remember, learn it now, that this coulomb is the SI unit of electric charge. People have been using different units of electric charges at different times. You can say there are some other units also, electrostatic unit, electromagnetic unit, or say farad also is sometimes used as the unit of charge, but we will be using only the SI unit of electric charge, which is coulomb. Okay, now also from your previous knowledge you know that similar charges will repel each other while opposite charges will attract each other. That means if there are two electrons, they will repel away from each other. If there are two protons, then they will also repel away from each other, but of one proton and one electron, if they are placed close, they will attract each other. So similar charges repel, opposite charges attract. Now coming to the next thing, that how do you define electric charge? Electric charge की definition क्या होती है? ठीक है, कैसे हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं? हम ऐसी क्वालिटीज, ऐसी प्रॉपर्टीज अपनी डेफिनेशन में डालते हैं जिससे उस चीज को पहचाना जा सके, राइट? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन में आई एम गोइंग टू पुट ए फ्यू थिंग्स थ्रू विच यू कैन आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, सपोज इफ आई हैव एनीथिंग और एनीथिंग इज गिवन टू मी, इफ द डेफिनेशन applies on that particular thing, then that will be electric charge, and if this definition does not apply on that thing, it will not be electric charge. So definitions are framed in such manner. So what is the definition of electric charge? See, the intrinsic property that produces electric and magnetic effects is called electric charge. This word intrinsic, intrinsic means inbuilt. You don't have to build something to it. It is inbuilt. जो पहले से ही उसके अंदर होती है, ऐसी चीज को हम intrinsic बोलते हैं. जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ चीजें सिखानी पड़ती हैं. You have to teach him how to speak. You have to teach him how to walk. Okay, you have to teach him how to hold the things. या तो आप सिखाते हो या बच्चा छोटा अपने आप सीख जाता है. So all these things are extrinsic. ये बाहर से उस पे डाली गई हैं. Okay, that is extrinsic property. And some things that the children, they need not to be taught. अगर उसके मुंह में थोड़ा सा पानी रखोगे वो अपने आप उसे पी जाएगा. ठीक है, कुछ मीठी चीज रख दोगे तो अपने आप उसे खा जाएगा. ठीक है, आप अगर उसके पास में बैठे हो और उसका अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो बाय मेकिंग सम साउंड और डूइंग सम एक्शन, ठीक है, तो सुनना, हियरिंग और देखना, लुकिंग, यू डोंट हैव टू टीच हिम. व्हाई? बिकॉज दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट चाइल्ड. ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज is the intrinsic property of matter. It is the intrinsic property of matter. Which matter?
protons and electrons. Do you know that the matter is made up of three particles, protons, electrons and neutrons. So you don't have to teach a proton what is electric charge. You don't have to teach an electron what is electric charge. They know it by themselves. So we call it the intrinsic property of matter that produces electric and magnetic effects. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया, ठीक है, मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिससे इस दुनिया में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. अगर आप इस दुनिया में से चार्ज को हटा देते हो तो दो इफेक्ट्स और उसके साथ में गायब हो जाएंगे, दैट आर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एंड magnetic effects, right? So this is how we frame the definition. And now what exactly is electric charge represented as? It is represented generally as capital Q or small q or dq, right? टोटल चार्ज बताना है तो कैपिटल Q यूज करते हैं, थोड़ा सा चार्ज बताना है तो Q, और डिफरेंशियल चार्ज यानी बहुत ही छोटी अमाउंट में अगर चार्ज बताना है देन वी कॉल इट एज dq. And charge is a fundamental physical quantity. You know, we have studied three fundamental physical quantities in detail, that are mass, length and time. This is the fourth fundamental physical quantity now included in our studies. अब हम यहाँ से जब आगे चलेंगे तो तीन की बजाय चार fundamental physical quantities अपने साथ में होंगी. चौथी fundamental physical quantity कौन सी है? That is electric charge. Okay, so what should be the definition? What should be the dimensional expression of electric charge? क्या होनी चाहिए? Now see, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मास की डायमेंशनल एक्सप्रेशन क्या है तो आप बोलोगे सर m1 है बाकी सब 0 0 है, ठीक है ना. अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथ की डायमेंशनल एक्सप्रेशन क्या है तो बोले सर लेंथ में 1 आएगा बाकी सब में 0 0 आएगा. ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम की डायमेंशनल एक्सप्रेशन क्या है तो टाइम विल बी 1 एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी 0 0. सो दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है. अगर एक चीज 1 है बाकी सब कुछ 0 0 है तो ये एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप जो क्वांटिटी की बात कर रहे हो वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. बट आई एम सेइंग दैट चार्ज इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, but the dimensional expression is not written as everything 0 and फिर एक चीज 1. नहीं, यहां पे दो चीजें हैं जिनकी पावर 1 है. That means electric charge is not a fundamental physical quantity because it does not depend on anything else. जो अपने आप पे ही डिपेंड करे, किसी और चीज पे डिपेंड ना करे, वो चीज होती है फंडामेंटल. तो चार्ज के लिए मैं जो जो डायमेंशनल एक्सप्रेशन लिखता हूं दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. तो यहां से तो ऐसा लगता है देखने में दैट चार्ज इज नॉट फंडामेंटल. देन व्हाई द डायमेंशनल इक्वेशन इज दिस? ऑल्दो चार्ज इज फंडामेंटल बट इसकी डायमेंशनल इक्वेशन थोड़ी सी गलत है. येस आई नो इट इज रॉन्ग, ये गलत है, लेकिन हम फिर भी इस गलती को कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं काफी सालों से, ठीक है. और ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट वॉज डिस्कवर्ड बिफोर इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, इन द टाइम ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. तो उसने करंट को पहले डिस्कवर किया और तब ये मान लिया गया दैट इलेक्ट्रिक करंट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो उन्होंने करंट की डायमेंशनल ऐसे लिखी m0, जस्ट अ मिनट, डायमेंशंस ऑफ करंट वर रिटन लाइक दिस, m0, l0, t0, a1. a यानी करंट हो गया, ठीक है. नाउ उसके बाद में जे थॉमसन आए और जे थॉमसन ने कहा कि भाई देयर आर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स और उनके पास में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और आप जो ये करंट बोल रहे हो ये उनका फ्लो होता है, राइट. तो अब जे थॉमसन के बाद में करंट को फंडामेंटल की लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन डायमेंशनल इक्वेशन अब भी करंट की वही है, राइट. तो चार्ज की डायमेंशनल इक्वेशन फिर हम कैसे बनाएंगे? हम ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे. सी, I is equals to Q by T, therefore Q will be equal to I into T. Now dimensions of current M0, L0, T0, A1 और time के dimensions हो जाएंगे T1. So this will become
the dimensional expression for electric charge. Okay. Now, the next thing in this chart is 1 coulomb charge has 6.25 into 10 to the power 18 protons. अगर कोई मेरे से बोले कि एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज मैं उसे ये वाला नंबर बताऊंगा, एंड दिस इज ए वेरी स्मॉल नंबर, ये बहुत ही छोटा नंबर है, 1 से तो बहुत ही छोटा नंबर है. तो 1 कूलम चार्ज अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी प्रोटॉन्स यू विल हैव टू ब्रिंग. वेरी सिंपल, दिस इज चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, so you divide 1 by this 1.6 into 10 to the power minus 19 by simple ratio and proportion, and the number you get is 6.25 into 10 to the power 18. इतने प्रोटॉन्स चाहिए आपको अगर आपको 1 कूलम चार्ज बनाना है. All right, now these were some very basic things about electric charge. We will study more properties of electric charge in the next video. I am leaving the board as it is for 5 seconds so that you can take a screenshot and you can use it as a memory chart also.